Hi guys, am I audible? Hi Kashish, I'm audible. Yes, sir, you're audible. Hi Raza. Raza, can you hear me? Kashish, can you hear me, guys? Yes, sir, you're audible. Raza, you there? Hmm. Hi. Hello. Yeah, hi Raza. Can you please switch on your camera, Raza? Hello, Raman. Sir, the meeting is live on YouTube. Raman, am I audible? Yes, you are audible. Can you hear us? Yes, 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 yes. Yeah, hi Raman. Hi Raza, how are you? I'm good. How are you? I'm doing good. Thank you Great. for. Uh, let's wait for 2 to 3 minutes. Okay, And then we can start. sure. There are already people waiting on YouTube channel. I seen 7 to 8 people live waiting for us. Okay, So let's wait for another 2 minutes and then we can start discussing on the topic. definitely. Okay.
Hi, Raza. I believe there is some glitch. Students are not able to join us on Zoom. The technical team is working behind the same. I believe there are students waiting on the YouTube channel. So we can start discussing about this topic. Right? So, Sure. Sure, we can start. We can proceed further. And today's topic is really interesting. As you know, this is the third day of the live session, and the today's session is about the IELTS band calculation method, which we call in another language IELTS band prediction. And this topic is very common and very popular among the IELTS aspirants. As you know, Raman, we have uh, trained a lot of students, and after taking the feedback from the students during their journey, how is the journey going on? Like, you know, there are a lot of students taking online classes already from us, so they have a question that, so what is a band predictor, IELTS band predictor? Why students score 6.5, not 7 in IELTS? So, right. well, let me just tell you, this is not a guesswork, it's a system. And today we are going to decode this system. Yes, it's a common question, sir. IELTS में marking कैसे होती है? Numbers कैसे मिलते हैं हमें? Exactly. Everyone is curious to know Mhm, बैंड हमें कैसे मिलेंगे, क्यों मेरे को इतने बैंड देगा, मेरे को कम दिए हैं, क्यों दिए हैं? mhm, तो mhm, I believe most of the students are still not clear कि mhm. IELTS में बैंड्स कैसे मिलते हैं, है ना, और क्यों बैंड्स का कैलकुलेशन होता है. I believe there are other exams like PG and TOEFL, उनमें शायद numbers होते हैं, right, Raza? Exactly. All right. ठीक है. So, to all the YouTube family of Vertex, welcome to our exclusive session of IELTS band calculation method. Whether you're preparing for IELTS academic or general, this session will help you to understand exactly how you perform, how your performance is measured, and to ensure the knowledge to boost your score strategically. We have designed this session for all the aspirants who are planning for IELTS, to give the IELTS maybe this month or maybe next month. तो ये एक Raman basically एक strategy है to decode all the 4 modules, like listening, reading, writing, and speaking. So basically जो ये band descriptor होता है, this is for the evaluation. Like student की जब एक journey start होती है, when a student start the journey, start the preparation of IELTS, so a lot of things comes in the student mind, like हम कौन से मॉड्यूल के साथ स्टार्ट करें, या कौन सा मॉड्यूल we are lacking somewhere. So for helping out the students to give the clarity, we have lined up with the students with overall band related from the average. Like let's take an example. Half of the band difference matters. Like student, काफी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो बोलती हैं कि we require 6 bands, 6.5 bands or 7 bands. That is okay, but एक normal scoring है, which every student take it, which is for 7 bands. So to close that gap between 6.5 to 7 bands or 6 to 7 bands, there is a strategy where we basically use in our IELTS coaching sessions and IELTS preparation sessions. Remember, Raman, I hope you remember, there's one of the student, Rama Krishna. Right. Right. So he just, I think हमारा जो first session था उसमें हम लोग ने Rama Krishna का एक TRF भी show किया था, and he got 7.5. And that student have only conducted, we conducted 1 week of live classes, and that is 1-to-1. And हमने उसका 2 mock किया था, and after the 2 mocks, we give the prediction. So, Raza, ऐसे generally हो जाता है, एक बच्चा, any student who comes to you, can the person prepare himself for IELTS within a week? Yeah, it depends from situation to situation, student to student. Okay, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं ना, वो they have some piece of information, like
गूगल, यूट्यूब, देयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके आते हैं, और जब भी हमारे पास एक प्रोसेस होता है, फॉर मूविंग अहेड विद आइल्स क्लासेस। सो जो भी हमारे पास स्टूडेंट आता है, तो पहले हम उसका एक डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं बेसिकली। डायग्नोसिस टेस्ट में वी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि स्टूडेंट कहाँ लैक कर रहा है। तो जहाँ पे भी वो लैक करता है, वी शेयर द रिजल्ट, द फीडबैक विद द स्टूडेंट, दैट व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। On the basis of that, we plan our classes and then we execute the classes accordingly. तो ये basic things होती हैं। और without preparation, without, I will not say without preparation, but yes, without guidance, हम लोग प्रिपरेशन ही नहीं देते, वी गिव द प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज IELTS is not something, a cup of tea for everyone. Although it's not like that, it's impossible. This is possible. We have a lot of students, we have numerous students who are from, other regional background, like Hindi medium background, people from, Haryani background, or Punjabi background, or Marathi background as well. तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट का एक रोड मैप तैयार करते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग ये प्रेडिक्टर है, ये जरूर अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, दो चीज होती है। फर्स्ट, एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का एक हमें आइडिया लग जाता है। दूसरा क्या होता है, स्टूडेंट्स का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप होता है। सो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Right. So before joining or paying us or paying anyone, so आप एक टेस्ट कर लेते हो, डायग्नोस कर देते हो, बच्चे का लेवल बता देते हो उसको, राइट? Exactly. That's the kind of band predictor. You are predicting something to a student कि currently you are standing at this position. If your target band is this, then आपको इतने दिन की practice लगेगी, and then you'll be good to go, right? Exactly, right. This is what the band predictors do. Exactly. This is how we follow, and this is what the band predictors work in our system. Because I this believe Tanu has joined us. There is a student who has joined us. Okay. Hi Tanu, how are you? Right. Hello, sir. How are uh, you? I'm fine. What about you, sir? Great, Tanu. Thank you for asking. It's okay. hey Tanu, hi, how are you? I'm fine, sir. What about you? I'm good, thanks for asking. It's good to see you again. Yeah. Okay, yes, Raman, you asking something? So we were talking about the importance of band prediction, right? Exactly. So within your demo, like you take a diagnostic test and understand the levels of student in all the 4 modules, like you discussed on the first day. There are 4 modules in IELTS: listening, reading, writing, and speaking. And so band is calculated in each module individually, or it is calculated as a whole? Okay, well, the IELTS scale ranges start from 0 to 9, band 0 to 9, and it's applied for all the modules. Okay, you receive a band score for each module, either it's a listening, reading, writing, or speaking. So this is how we will not only going to give a prediction, but there's the band life calculator. This is something really worked because ये हमने किसी एक स्टूडेंट के साथ अप्लाई नहीं किया। हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है, हम हर स्टूडेंट को ये बैंड प्रेडिक्शन देते हैं। एंड जो हमारा आईएल्स का जो सर्विसेज है, प्रीमियम सर्विसेज है, और जितनी भी सर्विसेज है, उसमें हम अपना बैंड प्रेडिक्शन हम ये अप्लाई करते हैं। दिस इज फॉर द गुड सेक ऑफ टू गेट द डिजायर बैंड्स, बिकॉज आईएल्स का क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टूडेंट समझते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हमारे बैंड्स आएंगे, मेरे नहीं या नहीं आएंगे। बट दिस इज नॉट अ रियल केस। बेसिकली क्या होता है, हम लोग का जो पैटर्न है वो बहुत ही रिफाइंड तरीके से है। बिकॉज क्या होता है कि जो आइल्स की जर्नी स्टार्ट होती है, ये different scenario पे based है। We do the diagnosis, then we do kind of discussion with the student, like when he or she is planning to give the IELTS exam, और कितना रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इसके बेसिस पे ही हम अपना एग्जीक्यूशन करते हैं। एंड जो हमारा जो बैंड प्रेडिक्शन होता है, दैट इज डिपेंड अपॉन हाउ द क्लासेस आर गोइंग ऑन। So according to you, Raza, आपने यही बोला ना कि if your English is not perfect, but still with the right guidance, आप clear कर सकते हो IELTS का exam. Exactly.
Okay, so can you tell in detail कि कैसे कैसे हर मॉड्यूल में बैंड प्रिडिक्ट मतलब बैंड का कैसे पता लगता है कितने बैंड आएंगे मेरे इस मॉड्यूल में? Okay, And so I got one question from Tanu as well. Like, can you please suggest the best books and website? Right. Tanu is straight on point. Tanu, okay, I will like to give the answer for the Tanu first. Tanu, the best website for the IELTS preparation is Wallet where you already are. And the best books you will be provided, all the study material will be provided by the Wallet only. Okay, so you are at the right Okay, sir. place. You are at the right place. Don't worry about that. Okay. Okay. Yeah, so we will help you out with the, with the each things like study materials, tips, tricks, sessions. Don't worry about that. Okay. Okay, sir. Okay, Raman. So let's conclude your part. You're asking that how we gonna diagnose the prediction. Right, for each module. Each module. So if we talk about speaking, okay, speaking, as we know, there are three sections. We already discussed in the previous parts as well, previous session as well: introduction, cue card, and discussion. So the four major criteria which we follow the speaking with, which is fluency and coherence. Okay. Second is the pronunciation. The third one is the lexical resource. Okay. And last but not the least, grammar range and accuracy. Because this is what IELTS required. And basically क्या होता है, मेन थिंग जो स्पीकिंग पार्ट है, इसमें जो एग्जामिनर्स हैं वो नेचुरल कॉन्वर्जेशन देखते हैं, नॉट मेमोराइज आंसर्स. सो ये जो चीजें होती हैं ये हम स्टूडेंट को फैमिलियर कराते हैं, बिकॉज स्टूडेंट क्या होते हैं, उनके पास बहुत से इल्यूजन्स होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड. एंड उनका यही सवाल होता है कि सर हम तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि आइल्स कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. बट यस, जो भी हमारे प्रीवियस पास एक्सपीरियंस है, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड से इतना फैमिलियर नहीं रहा है, हाउ वी हेल्प देम आउट एंड वी शेयर देम द परफॉर्मेंस and the student review as well. So yeah, this is how we proceed further with our IELTS classes. So that's about the speaking. Okay. Yeah. So like for speaking, we also have 0 to 9 bands, right? Yes. So each, like there are 4 parameters like you told me. So her parameter पे like equivalent marking होती है, there is a difference in that case also. See, that also depend upon situation. Like क्या होता है, सबसे बड़ी चीज जो होती है IELTS स्पीकिंग पार्ट में, that is a time management. Right. So that is for 15 minutes. जो एग्जामिनर्स होते हैं हमारे, वो ये चीज देखते हैं कि student, the candidate who is appearing for the IELTS speaking, that candidate is following the time management or not. Suppose there are three category, part 1, part 2 and part 3 in speaking. So part 2 का IELTS में already mention हुआ है कि क्यू कार्ड आपको, यू हैव टू स्पीक फॉर 2 minutes. अब इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट स्टॉप आफ्टर 1 minute, आफ्टर 90 seconds. ओके, सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज इसमें एग्जामिनर आपको पूरा 2 minutes देता है. जब 2 minutes आपके हो जाते हैं तो एग्जामिनर मूव ऑन, स्टॉप यू देन एंड देयर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमने क्या इंकाउंटर किया है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनके स्पीकिंग में मार्क्स कम रह जाते हैं, तो वी डू अ वैल्यूएशन दैट व्हाट वेंट रॉन्ग. तो उनसे हम स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं कि भाई आपने जब एग्जाम दिया था तो व्हाट वेंट रॉन्ग इन द स्पीकिंग. तो बोले सर हमने क्यू कार्ड हमने 50 seconds में खत्म कर दिया, 1 minute में खत्म कर दिया, एंड आफ्टर दैट एग्जामिनर हमें indicate us, speak on, you have to keep speaking, you have more time. So examiner do that without saying into the, looking into, without, saying something. So with the directions, they give you the guidance. So यहाँ पे we work. So क्यू कार्ड्स का अगर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट आई विल ऐड ऑन वंस अगेन, क्योंकि क्यू कार्ड एक ऐसी चीज होती है, ये बैंड को इन्हांस करता है, बिकॉज इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो तो मैटर थोड़ा करते ही करते हैं, बट या द मोर थिंग इज दैट हाउ कंफर्टेबली यू आर स्पीकिंग. देयर शुड बी नो इंटरप्शन लाइक स्टूडेंट्स बहुत से होते हैं जो हमारे पास आते हैं, हम उनका जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो उनके पास जो आंसर्स होते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी कहीं रिकॉल करके कहीं से कहीं जोड़ के, तो जो आंसर जो उनको देना होता है वो आंसर नहीं आता है.
Right. तो एग्जामिनर गेट एन आइडिया कि ये आंसर जो है ये रिकॉल हुआ है. दिस इज नॉट नेचुरली स्पोकन. Examiners, they have an idea about it, that they don't need a fluent speaker or American native speaker, because they are from India as well, and they only need two things. One is the confidence level and the natural speaking and the well constructed answer. So this is what matters in the speaking section. Okay. Yeah. Okay. Now this is about the speaking. Now let's talk about listening. Okay. So listening में basically क्या होता है? Listening भी थोड़ा speaking की तरह I will say it's a challenging plus interesting, क्योंकि listening में क्या होता है? They have to listen to the audio. Right. And मेरे स्टूडेंट्स में मैक्सिमम मेरे को ये बोलते हैं, सर सबसे अच्छा आपका जो IELTS का सेक्शन होता है दैट इज लिसनिंग. exactly, करने में मजा भी आता है, इवन हमें exactly, पूरा कन्वीनियंट भी लगता है अपने अकॉर्डिंगली, राइट? exactly, exactly. So listening एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट को स्ट्रैटेजी के बारे में एक आइडिया हो जाता है, तो वो स्टूडेंट इस मॉड्यूल को बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनके लिस्टिंग में 8+ आए हैं, which means they score 35, 36 और 37 from out of 40. So जो बेसिक, हाँ, हम लोग जो बैंड प्रेडिक्शन में हमारे जो थिंग्स विच आर कवर्ड इन लिसनिंग, दैट हम लोग जो एग्जाम प्रैक्टिस करवाते हैं, दैट इज अंडर द एग्जाम कंडीशंस, नॉट एनी अदर कंडीशंस, बिकॉज जो IELTS में रिक्वायरमेंट होती है हम वो फॉलो करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स I already mentioned who are coming, they're coming from the different background, right? They already practice somewhere from the different sources. So सीधा हमारा एक indicator रहता है कि भाई we follow as per the exam conditions. Second, we also help student to learn to predict answers, because listening, अच्छा सबसे बड़ा challenging in the listening section is that it's only plays one. आप उसको rewind नहीं कर सकते हो. So some students, Audio you are talking about. Yeah, I'm talking about the audio. Right. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट को जो चैलेंज आता है, दैट इज सर स्किप हो गया आंसर, क्योंकि जो आंसर होता है वो आपको पहले यू गेट इफ यू प्लानिंग टू गिव IELTS बाय PBT, पेपर बेस्ड टेस्ट, देन आपको आंसर्स ट्रांसफर करने होते हैं. तो उसमें कई बार क्या होता है कि आंसर स्टूडेंट्स के स्किप हो जाते हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है. सो वी ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट to adapt the strategy to predict the answers. Okay. Yeah, and this strategy really helps students, because kuch hamare students the, तो हमने whenever any student give the IELTS exam, we take a feedback. How was it? What went wrong? So काफी students ऐसे होते हैं जिनका बोलते सर हमने बस predict किया था जो strategy आपने बताई थी वो, and after the results it worked. तो ये स्ट्रैटेजी एक हमारी होती है. दिस इज रियली help in band prediction. And एक और चीज I like to add on, last but not the least, which is improve spelling and attention to detail. Okay, suppose you heard any new word, okay, and any person, any candidate who unable to pronounce that word. Suppose we got any word which is photography, right? And any student doesn't know what is photography. Sometimes students have challenges. They say photography, right? So they got confused. What is the spelling? Photography and photography are the same spelling. The pronunciation is different. Right. So we work on these scenario, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा people, the candidates who are prepared for the IELTS exam, they face challenges, and this will be covered in the band prediction, that how you can apply this strategy and you can score good bands. So जब हम band prediction evaluation करते हैं and we found any student lacking somewhere, so we help with these strategies only. So this is about listening plus reading aspect. I have one question in case of listening. Like, it is generally said कि listening में आप out of 40, 23, 24, 25 correct कर लो, you get 6 bands, right? So band predictor तो student के लिए उतना ही हुआ ना कि उसने 24 ठीक कर लिए, that is fine for him to get 6 bands. So in band predictor, what else are you going to give us?
to the students, like you will tell them how they can achieve 30 correct answers instead of 24 or 35 correct answers. And you also said that listening, the audio is played only once. Yeah. So sometimes what happens, suppose I miss that question. Now what I do need to do? Okay. Well, इसके मैं आपके दो आंसर दूंगा. Firstly, we don't go for 6 bands, 23 or 22. हमारा जो रहता है टारगेट 40 out of 40 रहता है. Because Great. it's not challenging. It's a listening is one of the very easiest module what we have triggered. Okay. Secondly, जो आप इसके tips और tricks मांग रहे हो, वो हम लोग अपने क्लास पे ही देंगे. If any student, I will suggest the students to have one demo with us and join our session where they will get, a depth knowledge about it. क्योंकि देखो एक होता overview देना, लेकिन जब तक you're not able to, join the classes and understand the, the depth insights of IELTS, that how, we can go for the desired bands in the very first attempt. So this is something, will be, shared only when any student, join our premium classes. Okay. Yeah. So we covered listening, reading, we covered speaking. Now let's talk about writing. Okay. Yes. Writing में एक चीज हमने observe करी है. We have observed that people got stuck somewhere 6 to 7.5 or 6 or 5.5 to 7. एक यही रहता है maximum students का. Really students get 7.5 or 8. Right. So इस पे भी we have worked on it and इस पे भी हमने band predictor बनाया है. So what we recommend students, our students who already enrolled for Validity IELTS classes, that they have to plan their answer before they start. Because let's talk about IELTS academic. IELTS academic में क्या होता है, एक तो part 1 होता है जिसमें 150 words होता है, that is a pie or diagram. ठीक है. एक होता है writing task 2, which is a essay. Basically these are opinion based or advantages or disadvantages, agree or disagree, right? इसमें कुछ students हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास template है. तो what I would like to suggest that templates will not work in real exam. Templates basically, you will just recall the answer, लेकिन तब template क्योंकि they are different type of IELTS writing task and task 2, and you never know IELTS में कौन सा क्या आ जाए, तो आप कहाँ तक template याद करोगे. So it's better. हमने एक strategy अपनाई है for the IELTS prediction में, which is use linking words smartly. There are some linking words. I have a question, like Okay. template use करने का. अभी recently last year एक movie आई थी Donkey. I'm not sure if you have seen that or not. Okay. उसमें क्या था, there was one character, वो पूरा template पढ़ के गया था पेपर. मतलब there were friends, it's a movie about 4 or 5 friends. उसमें एक friend था, वो template पढ़ के गया था and उसके मूवी में मार्क्स आ गए थे 6.5. रियल में ऐसा होता है क्या? देखिए, to be honest, I will not suggest anyone to go with the template, because it will kills your creativity. Okay. Understand, IELTS is the first step of moving towards to your destination, because IELTS is a platform, एक आपको एक overview, एक guidance देता है. Let's talk about the students who are planning for study abroad. जैसे हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स मिलता है, क्योंकि वहाँ का और यहाँ का इंडिया का पैटर्न अलग है. तो वो जो पैटर्न होता है थोड़ा इसी टाइप का होता है. जो इंग्लिश इसमें यूज होती है, सिमिलर काइंड ऑफ इंग्लिश जो है, वो उनके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में भी इम्प्रूव होती है, यूज होती है. सो दैट इज व्हाई दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ IELTS इज हियर टू students get familiar. It's not only to give in the IELTS exam. Its main thing is that you have to understand that what is IELTS, and this is the very first phase. क्योंकि अगर आप learn करके जाओगे, आप कहाँ तक learn करोगे? तो you have to be creative. तो हमारा जो वर्ल्ड एडेक्स का जो IELTS कोचिंग क्लासेस होती है,
We not only give them the IELTS classes, we ask the student that which country you're planning, and we also give them the culture training. That is also the part of something, which we train to the students, because students, they don't have any idea about it. Like anyone's planning for UK, they just saw the YouTube or any video somewhere, and they just uh, come to us, do the process, and move to the desired country. But before moving to their destination, we give them the glimpse of that country. Like few examples, like time, what's the time duration, kitne time zones hote hain. Like US, there are 4 time zones: UST, PST, MST, and CST, right? So these are some culture trainings we also provide for the students, so that they get the importance of World X and the IELTS preparation as well. Right. Perfect. Yeah. Okay. One more thing, in the band predictor, we also, this is about the writing. We make student prepare to avoid repetition and stay towards the topic, like stuck towards the topic. Because क्या होता है, students repetition बहुत करते हैं. ऐसे में I'm talking about. Okay. Yeah, repetitions like and उन्होंने कई बार use कर लिया. First line में use किया, third line में भी use किया, second line में भी use किया. Then they don't know where to use comma, conjunctions, full stop. They don't, because these are the things which closely look by the examiner. So इसमें थोड़ा सा हम जो Indians हैं, students basically I'm talking about, वो थोड़ा सा familiar नहीं होते हैं. ये तो बहुत बेसिक ग्रामर हो गया ना, तो आप वो भी पढ़ाने वाले हैं रज़ा अपनी क्लासेस में? देखिए, बेसिक ग्रामर, वी विल नॉट फॉलो द बेसिक ग्रामर, वी फॉलो द ग्रामर एंड द वोकैबुलरी विच इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द IELTS, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. राइट. इंग्लिश एक बहुत बड़ा डोमेन है, रमन, एंड वी कैन नॉट कंप्लीट दैट डोमेन इन दैट स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, एक चीज हम स्टूडेंट को, ये जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, मान लो एक कोई स्टूडेंट है एंड उसका ड्रीम है जाना न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाना, एंड उसका जो बेसिक्स लेवल भी नहीं होता है, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बेसिक लेवल भी IELTS की तरह नहीं होता है, तो उनको वी कैन सजेस्ट सम क्लासेस, वी कैन गिव देम सम क्लासेस, एंड दैट बी शुड बी इन द लेवल ऑफ IELTS ओनली. I believe we have one student, Shiva. Shiva, do you want to ask anything? I can see you being unmute. Hi, Shiva. My bass voice is not coming to us. All right, we can continue, Raza. Shiva, if you have any question, you can write it in the chat box. Even Tanu, if you are not willing to speak in between, you can write your questions in the chat box and we'll answer you. Yeah, we forgot about Tanu. Tanu, you want to ask something? Fine, let's Okay. go. Yeah. Okay. All right. So this is all about the band predictor. Now, why our band predictor is so important and it's very crucial, because with the band predictor, IELTS band predictor, we also provide the support tools. Okay. Now, what is support tools? Dekho, support tools kya hota hai? Basically, these are the short tests, right? Let me just give you a small glimpse of it. Like हमने किसी को, कोई स्टूडेंट है IELTS की क्लासेस कर रहा है, तो मंडे ट्यूसडे उसने हमारे साथ रीडिंग या राइटिंग करी, तो वेंसडे हम उसका एक शॉर्ट टेस्ट भी लेते हैं. एक तो होता है आप उसको प्रैक्टिस करा रहे हो, आप उसको गाइड कर रहे हो कि हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट. लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग टास्क. So first, initially 2-3 days, we help the student to construct the essay, how we can, construct the essay as per the guidelines of IELTS. Secondly, kya cheez we have to require in IELTS, like vocabulary, cohesion, connectors, other things as well. So initially we train in these areas, and then on the third day we take some short test, so that we get an idea that student is grabbing the things. तो ये जो supporting tools होते हैं ना, ये बहुत काम करते हैं, रमन. Right. And Tanu, we got a message from Tanu saying that support is the best way to achieve anything. Honestly, true, Tanu. Without support, we are like, we can do things, but with support, we can do things perfectly. Exactly. I agree with that, Tanu. Really appreciate it. Okay.
Yeah, Raman, any further doubt, please ask. Well, I'm somewhat clear with your band predictor kind of a thing, and I Okay. believe this is very beneficial for the students. Hmm. Right? And once the student takes his demo session, he'll be Exactly. more clear with this concept and why it is important. Exactly. There are multiple coachings I've seen, I've been a part of, and there's nothing like this. Mhm. They generally a student comes, they connect with the student, they talk with the student, and they ask student to take admission. They do not give any demo or something. So that is where Voltex is doing some things in a very positive way, I believe. You are creating information, providing information to the student, okay, where your current level is and how you can achieve your desired bands, right? So Exactly. that is something appreciated, Rosa. I hope this will definitely help students in Definitely. ways, right? So we have one question from Shiva. He said, he's saying that in writing task 2, can I use phrasal verbs or not? Recently, I have read a 7 band sample essay of IDP. They used phrasal verbs. What's your take on that, Raza? Okay. Yes, you can use phrasal verbs. However, you should know that which phrasal verb you need to apply, because phrasal verbs are something uh, you cannot use. There are some limitations of phrasal verbs in each passage. Okay. I think there is a power failure at the end of Raza. He'll join us back, Shiva. He'll answer your questions. And right, he's our expert IELTS counselor. He has more than 8 years of experience. And yes, I believe you can use phrasal verbs as far as I'm concerned. And if you have seen a 7 band sample essay of IDP and they are saying that and you are saying that they use phrasal verbs, that is totally acceptable. But you should know the limitations of phrasal verb, and is it in the context of your passage, like you are not going out of the topic. If you are using anything within your asked question, then it is absolutely fine, right? So there is no rocket science. Whatever you know in English, just make sure that you are not memorizing answers. No, you are not using repetitive words. Your passage should be in an alignment, like एक तरीके से आपने लिखा हो. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन देयर शुड बी अ बॉडी पैराग्राफ, अकॉर्डिंगली उसका एक एग्जांपल कोट कर देना आप. देन देयर शुड बी अ सेकंड बॉडी पैराग्राफ जो वाइस वर्सा हो, अगर एग्री और डिसएग्री वाले पार्ट में है, कुछ इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में है, तो add on हो उसी में इंफॉर्मेशन. And then at the end of the passage you should conclude by giving your opinion or whatever you want to conclude. एक बहुत क्लियर वे में उसको पैसेज को आप सिंक्रोनाइज करोगे, बनाओगे, फॉर्मेट यूज करोगे. once you will be in the class, I believe Raza sir will provide you with the entire format of the IELTS exam. and कैसे हमें फॉर्मेट करना होता है. IELTS इज बेसिकली एन एग्जाम जिसमें एक स्टूडेंट को, जो मुझे जहां तक लगता है, कोच सिर्फ एक फॉर्मेट सिखाता है. सी आप क्लास 1 से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो आप मैक्सिमम लोग, राइट? सो 12 साल लगे आपको इंग्लिश सीखने में. वी ऑल नो दैट यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द लैंग्वेज इंग्लिश. आप सबको सब कुछ आता है, बस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, क्या टिप्स यूज करनी है, ट्रिक्स यूज करनी है आइल्स को क्लियर करने के लिए. वहां पे एक कोच का रोल होता है. अगर हमें फॉर्मेट एकदम क्लियर है अपने माइंड में, कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं, कैसे रीडिंग करना है, किस टाइप का क्वेश्चन मेरे रीडिंग में आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन मेरे लिसनिंग में आने वाला है, राइटिंग में वो कौन से टाइप के क्वेश्चन दे सकता है. देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं कि इस टाइम इन्हीं टॉपिक्स पे आ रहा है. सो यू कैन प्रिपेयर वेल इन एडवांस. हमारा हमेशा से रहता है, आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स कि डू नॉट मेमोराइज एनीथिंग, क्योंकि आईएलटीएस का एग्जाम एक समवट मैथ्स के एग्जाम की तरह होता है. मैथ्स के एग्जाम में यू हैव इक्वेशंस, आपको फॉर्मूलाज आते होते हैं, आप अकॉर्डिंगली उस इक्वेशन में उस फॉर्मूला को लगा के उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो. सिमिलरली इंग्लिश से आप वेल अवेयर हो. आइल्स का कोच आपको पूरा फॉर्मेट बताता है कैसे उसको क्रैक करना है. कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको क्रैक करने का तरीका है. दैट इज वेयर द आइल्स कोच कम्स इन. सो रेदर देन थिंकिंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम जिसमें आपको बहुत कुछ याद करना है, बहुत कुछ मेमोराइज करना है, या आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज टेस्ट हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. इट्स अ कोर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम, और अकॉर्डिंगली ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है. कुछ भी मेमोराइज नहीं करना है.
आपके रियल लाइफ आंसर्स आपको मैक्सिमम बैंड्स दिलवाएंगे, राइट? इन स्पीकिंग एज वेल, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, जो भी सही आपको लगता है वही बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप बना के कुछ कहानी बता रहे हो एग्जामिनर को, यू शुड बी वेरी ट्रू एंड यू विल गेट द मैक्सिमम बैंड्स। सिमिलर इन राइटिंग, क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि ड्राइवरलेस कार्स का फ्यूचर है, इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इम्पैक्ट? सो ऐसा नहीं है कि आप खाली पॉजिटिव लिखो और नेगेटिव नहीं लिखो और अपना आंसर कंक्लूड कर दो। यू नीड टू राइट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स as well और नथिंग, सो यू हैव टू मेंशन बोथ दी पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि पॉजिटिव में हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, ड्यूरिंग आवर ड्राइविंग आवर्स हम साथ में कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर सकते हैं, राइट? एंड उसमें नेगेटिव ये भी होता है कि ऑल्दो इट इज अ ड्राइवरलेस थिंग, इट इज अ मशीन, तो मशीन में कभी भी फॉल्ट आ जाता है ना? सो पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं हर चीज के और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, अकॉर्डिंगली आंसर लिखना पड़ता है। अब सिमिलरली इसके लिए आपके पास शिवा कोई फ्रेजल वर्ब है इस पैसेज में डालने के लिए, डेफिनेटली यू कैन पुट इट इनटू, किसी फेमस ऑथर ने कुछ बोला है, कहीं कोई नोटिस थिंग है, कोई बात है जो आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में करके आप कर सकते हो। सिमिलरली एग्जांपल Recording in progress. let's wait for Raza. There is some problem in the connection, I believe. Let's wait for 1 minute if Raza can join in. I believe there is a huge power failure in Noida due to heavy rainfall, Tanu. So we are going to end this meeting today, and we'll come back tomorrow again. Hope to see you tomorrow. Okay, bye bye.
Recording stop.